Okay, welcome back, guys. Welcome back to the another Genshin stream. Yeah, भाई पिन कोड के अलग मैसेज चल रहे हैं। ठीक है, मेरे कोड पे नोटिफिकेशन ही नहीं भेज रहा भाई। मेरे साथ ही साथ हो जाए। एक मिनट रुकना, गाइस। चैट में कोई है तो मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, चैट में कोई हो जा। टेक भी नहीं हो रहे भाई। कोड के अलग की तरफ है, की तरफ से स्टार्ट करो जल्दी। कर तो दिया स्टार्ट। क्या मतलब ये दिखा नहीं रहा डिस्प्ले? कहाँ से आ गई इनकी बहन तो। Oh, so sorry. हो गया। जिंदा हो क्या? पीछे आओ। हाँ, फेस टू फेस बात करो। अभी कुछ बोल रहे थे आप? जोर से बोलना है। अरे अरे, पार्टी चल रही, तुम्हारे बंदे छिट गए हो। पार्टी हो रही है भाई। हमारे फूफा को पेल दिया वहां पर। Cool it. विंड में सिमट गए। हेलो हाइपर भाई। हेलो प्रो स्टार गेमिंग, क्या हालचाल? हाँ, मेरा भाई आज पूरी स्टोरी देख के आया इसकी बहन। ऐसे ऐसे कैसे समझ नहीं आएगी ये है।
हाँ तो पहले अपना वो कर लेते कमीशन। हेलो हेलो गाइस, बस मैं बढ़िया, आप बताओ। नॉइस, वेरी वेरी नॉइस, वेरी वेरी नॉइस। तो चूते कमीशन दे रखे हैं। डाउन वेरी के कर लेते हैं। बराबर बराबर। स्टैच्यू ऑफ डेवन। टॉप टू टर्नर। अरे क्वेस्ट बाद में करूंगा, पहले डॉक्टर लिविंग स्टोन्स फ्रांस। क्या था वो? गज। जस्ट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मौज करो। अजय टर्नर भाई जो भी है। Helena knows what do you thought. Okay, so thank you. यो अरे स्मोकी भाई आओ। Let's go for the next। क्या कर रहे हो? अरे वो डेली कमीशंस कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। फिर अपना वो ये वाला वो करूँगा फर्स्ट। क्या इधर ही है क्या? पार्क मैं उधर क्यों जा रहा हूँ? Freeze! This moment will be frozen in time. लगे ना हटा था। अच्छा ये वाला नहीं है, माफ करो ये वाला है। Cool it! Freeze! शील्ड यूज तो करो। कौन सी शील्ड है मेरे पास? शील्ड का है। Cool it! मेरे पास शील्ड भी है। योली की अच्छा। योली की शील्ड दूसरे कैरेक्टर पर भी रह सकती है। हेलो हेलो, ऐसा क्या? I must leave no stone. Dodge this! Ah!
बाय। अब भरोसा इसका क्या कर रहा है। लास्ट भाई वेलकम है। डिफीट। Don't get frostbite. Freeze. ये थोड़ी मारना है इस बहन के रहे यार। नेक्स्ट है। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? Why are you crying? ये इसके लिए तो चाहिए कैरेक्टर फेंकने वाला, मारने वाला। अभी मेरे पास कैरेक्टर ही नहीं है। हेलो हेलो तुषार भाई। लेवल 10 है ये चला है ना भाई। चल को मैंने लेवल 30 कर 40 कर Behold, रखा। नाइस। the Prinzessin der Verurteilung. आज अब बैंड करते हैं। किधर क्या बैंड? क्या करती है? अरे भाई सर बहुत ही कम हो रहा है इसको। Oz, reveal thyself. Rain outlines your fate. Cool it. अरे फक, लेट हो गया मैं। Freeze. Don't push your luck. एक मिनट चैट पढ़ रहा हूँ गाइस, रुको। बहन चो ऊपर चढ़ जा। नहीं नहीं ऊपर चढ़ लो, पहले चढ़ लो। अरे चैट क्यों दबा रहा हूँ मैं? No, my sword. Steady as stone. As you wish, mein Fräulein. Cool it. चलो ब्रो, एक मिनट। सब अपग्रेड मत करो, सब नहीं करा, इसको पहले कर लिया। उस टाइम में 3 मिनट डिले देख रहा था, मैं मैसेज कर रहा था, 3 मिनट बाद पता चला आपने तो ऑफ कर दी। आउटरो चल रहा था। बहुत बढ़िया। 10 अलग अलग टीम्स बना सकते हैं, टीम बना कर रख लो, I चेंज created करने another में universe आसानी and रहेगी। founded paradise. तभी For ये I, गलती Fischl, करते हैं am the अपग्रेड करने Prinzessin का। der मैं ये नहीं, 4 कैरेक्टर पर फोकस करो पहले। ये फर्स्ट 4 एंड फिर 8। ओके। और उनका कोई शॉर्टकट है क्या करने का? तो कोई शॉर्टकट बटन है क्या चेंज करने का? ये 4 तो मेरे रहते ही हैं, ठीक है। We're going to hunt. पार्टी चेंज करने का कोई वो है क्या? ठीक है, ये 2 इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक को मैं करेगा एम्बर एंड
I can do it. ठीक है, ये दो आ गए, इसको हटा के कुछ और रखेंगे। क्या रखूंगा? फायर हो गया, ओके, एक ये रख लेते हैं। एम्बर है बट इसकी जरूरत क्यों है? छोड़, वही रखते हैं। इधर गई, इधर रखते हैं। ठीक, Outrider Amber, reporting. हाँ, साइड में जाकर डिप्लॉय दबा दो। साइड में जाकर डिप्लॉय मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर चेंज करते, फाइव कर गए। जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाना पड़ेगा, फिर जाके ये खुलेगा, फिर पार्टी चेंज करो, पार्टी 1, यहाँ से जाके डिप्लॉय करो। इसका कोई शॉर्टकट है? जिस टीम को सिलेक्ट करना है उस पर जाकर हाँ, तो वो तो ये खोलना ही पड़ेगा ना, पार्टी तो खोलनी पड़ेगी ना। ये कंट्रोलर बस सेट है, ठीक है, कैरेक्टर चेंज करने से फास्ट हो जाता है। अच्छा, कैरेक्टर चेंज करने से फास्ट हो जाता है, बट इसका कोई शॉर्टकट तो देना चाहिए ना। की बाइंड में है क्या इसका कुछ? बाइंड switch to party member and use element burst. Left alt, open shortcut, menus, कैरेक्टर स्क्रीन है ये तो ठीक है। फर्स्ट में पार्टी का दोना है जो ओपन पार्टी सेटअप स्क्रीन, एल एल एल, जब तक मैं एल पे जाऊंगा मेरे एल लग जाएंगे, ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे दबाने का, ऐसे दबाने का ये खुल जाएगा। ओके, नाइस। इस लाइक करो भाई, लाइक 5 ही लाइक्स है, ठीक है भाई, लाइक ही नहीं कर रहे भाई। ओके, फिर इसको तो से ये जाके डिप्लॉय कर दो, ठीक है, ओके, दैट्स गुड, वेरी वेरी गुड। तो वो की मार्क लगाओ, ये मार्क। मैंने आज इसकी स्टोरी देखी, ठीक है, तो मैंने पूरी नहीं देखी, मैंने वहीं तक देखा जहाँ तक उसको मारती है, उसके वाइफ को, जो भी है वो ड्रैगन सा जो आता है। Oh, so sorry. Freeze. अच्छा, ल्यू तक की स्टोरी देखी, हाँ। मैं सोच रहा था पूरी देख लूं, पर स्पॉइलर हो जाता है, आगे की स्टोरी मेरे को पता लग जाती, फिर स्कैम हो जाता। पर उतना उतना एक्सप्लेन से नहीं समझाया उसने, पता है, उतना एक्सप्लेन नहीं करा उसने। Freeze. Cool
चेंज हो जा। समरी दी होगी खाली खाली, पता नहीं क्या ही दिया था उसने, पर स्टोरी समझे। की माँ का भरोसा, डेंटिस्ट का सुझाव। भाई रिजल्ट Does this? कब आग बुझ। मैंने अपना वीडियो भी बना लिया है उसका, तो अबे आग लग गई। कल जो उससे फाइट हुई थी, क्या नाम था उसका, तो नाम था ना वो, ये वाइफ से, उसका नाम नहीं याद आ रहा। और उसने उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, पता है, कुछ ऊपर ऊपर से पता नहीं क्या बताया है, पर हाँ इतना ओसीएल ओसल पता नहीं जो भी है, व्हाटएवर वही। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था उसमें ना। और कोई वीडियो मिली भी नहीं मेरे को। शॉर्ट में बता दिया होगा, पता नहीं कैसे बताया उसने। हाँ पर इतना अभी तक का स्टोरी में समझ गया है। बहुत दर्द। चलिए ना। अच्छा इसमें आवाज नहीं होगी लॉल। If he really wants to get better, he needs to keep taking his medicine, and also get he need to of rest. Okay, I must have to told him 1,000 times, but अब पढ़ने तो दो। ये गेम साला एक तो बोल भी नहीं रहा, ऊपर से पढ़ने भी नहीं दे रहा। This isn't a conversation for children. हम्म। इतना पता लगा कि इनके गॉड का कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके चक्कर में जोंगली ने जानबूझ के खुद को मरवाया, मतलब फेक डेथ करवाई, ताकि वो देख सके थे ल्यू के लोग अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते उससे प्रोटेक्शन, तो वो फिर दोबारा उस पर वो कर लेते,
गॉड्स, जो भी गॉड्स है वो यू पे दोबारा वो कर लेते अपना, वो जो भी राजवाज होता है। तभी वो लास्ट फाइट में पाइमोन जब बोलती है कि उनको बुलाना चाहिए, तब वो मना कर देती है। क्या नाम है उसका, जिंगलुंग जो भी है। बहुत खतरनाक स्टोरी है। ये मेरा हो गया। जोंगली खुद ही गॉड है और रिटायर होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी डेथ फेक की। डेथ देखने के लिए लियू के लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बिना या नहीं। हाँ एग्जैक्टली वही। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो जो गॉड थे उनको, क्या अगर तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए खुद को, तो हम तुम पे दोबारा वो कर लेंगे। एक तरीके से राज, एक तरीके से उनके अंडर में आ जाएंगे। तभी क्या नाम है उसका, किंग जूलिंग के, पता नहीं क्या नाम भी तो भूल जाता हूँ, जिसका वो था जेड चेम्बर जिसने बनवाया, उसने मना कर दिया था बुलाने से। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. इन दोनों की तो अलग बकचोदी है भाई, इन दोनों की अलग Ad बकचोदी है। Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. कैथरीन की नहीं, कैथरीन की नहीं, ये दोनों कजिन्स की। कुछ तो बता रहा था वो, उसने थोड़ा सा बताया, फिर बोला कि बाकी का आगे के चैप्टर में, पर मैंने आगे का चैप्टर देखा ही नहीं। अब इसमें से कौन सा करूं, तो होएगा ही नहीं। अच्छा होएगा होएगा। ये वाला करो, नो देम क्या है, टॉक टू गार्ड्स एंड, ये नहीं करना, ये वाला करना चाहिए। इसमें 800 मिलेंगे। अच्छा एक की मिली, ओके। कैली जीन, वेंटी, वेंटी का भी अलग ही बकचोद। वेंटी भी गॉड है, इसकी माँ कजन नहीं, बहन भाई है, ट्विंस। हाँ वो व्हाटएवर। हाँ डेन स्लिप का मेन स्टोरी, एग्जैक्टली। डेन कुछ तो बता रहा था वो, डेन स्लिप पता नहीं, मैंने देखा नहीं था। तो ये वाला करना चाहिए ना, स्टोरी को ऐसे छोड़ो, वहां करेंगे। भाई बोलियो। Ah, हाँ बोल रहा है। honorary knight. Is something the matter? I'm looking for the strange with an eye A patch. stranger with an eye patch. Let me think. Ember Oh, yeah. I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. डिस्कॉर्ड मादर के नोटिफिकेशन दे ही नहीं रहा बहुत। मेरी दिस सर्वर पे सारी बकचोदी होती है।
I keep watch. You leave, you call me. Guys like showing, not showing. Not showing. When you're high up, everyone can hear your voice. What? You need something? So I'm looking for a stranger with an iPad. I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights or the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? When you're high up, everyone can hear your voice. What will it be? Grape juice or apple cider? Another day, another lack of alcoholic options. Hey, Charles! Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. ये He ढूंढ comes किसे here रहे? every night. Just a drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Why, I just gave it to you. कैंसिल Quite the उसी को ढूंढ रहे हैं क्या? connoisseur. अच्छा पाक मेरे को लग ही रहा था वो भी तो दिखाया था उसने Investigating अंदर everything as अंदर always. Guess that's Diluc for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Go to the second. Okay. Adventure. Even if you are a close friend. I can't give up. Another. Ah, welcome, sir. आ गया. The wine that you previously ordered is here. He's really here? Let's go downstairs and have a look.
और ये चुमते ढूंढ रहा है अभ्यास को, अभ्यास के पीछे पड़ा रहता है ना। हाँ याद आया, उसने बोला If था you are a close अभ्यास, friend, can't give up. वो जो चूतिए से विलन थे आइस वाले। Is better. Dandelion wine. What would you like? हाँ अभ्यास, एडवेंचर विद द एडवेंचर गिल्ड। Oh lab, how do you do? I am a honorary knight of ceremonious. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? So I traveler. A traveler, you say? Why are Why you are traveling? you traveling? Looking for my lost relatives. अबे ये क्या है? बोल तो सही कुछ। That's as good a reason as any. Sit down Sit over down there. over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. इमरजेंसी मूड बोलूंगा, चिढ़ जाएगी भाई। We're the best of friends. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Well, I was hoping to invite you to adventure with us. Sure. आ रहा। And he was so cold just a moment before. Paimon's got a bad Bad feeling feeling about about this. But I will require advance payment. 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. Do I need to answer them all correctly? The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? How do you know I that? know everything that I should. Well, answer the question. Question क्या था बोलिए? Unity on state people gave Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then? I understand. It seems that you're different from him. I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Well, I have to meet Abyss means in the past. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss हाँ Herald. पता वो पता उसने The बताया था Abyss मेरे को। Herald?
An even वो more लोगों से उनको twisted छीन रहा है और abyssal लोगों को being, one ठीक that बना रही है। क्या commands नाम the था उसका? abyss mages. उससे फीमेल थी वो। पावर मिलती है लोगों को, विजन किसी किसी को ही मिलता है, लेकिन हाँ ऐसे हमारे कैरेक्टर को मिला हुआ है। Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! रेडियन शोगन इलेक्ट्रोगॉड। We haven't encountered the non-human abyss or... There's some And- reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to avoid your path. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're They're looking for a looking better time to back there. ambush us or something. Uh-huh! We're super duper strong! बराबर। That manner. It's just like his. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on मेरे को hand, इसकी बातों से the क्यों पता Abyss लग रहा है Order कि has ये इसके re-infiltrated भाई the को Temple of जानता the है। Falcon. Let's meet up at the temple. मुझे इतना पता Perhaps है your ये questions about the कास्ट है, Abyss ये will be कास्ट है, answered इसको वो there. मिला हुआ है। मेन कैरेक्टर के पास विजन नहीं है, हमारा कैरेक्टर को फ्री में पावर मिली है, इसलिए स्पेशल। I can't give up. Even if you are a close friend. अरे बहन जेंसिफ जानता है इसकी बहन को। हाँ वो बहन को नहीं, भाई को। मैं फीमेल है ना। के भाई को। अच्छा भाई बोला क्या मैंने, बहन क्यों पढ़ा? फक बैड। टेम्पल ऑफ फाल्कन। This abandoned temple does bear some marks of the Abyss, the Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. What are you talking about? Oh, it's nothing. Let's head inside. मैंने मेरे तेरे लिए बहन को। अच्छा नहीं, मैंने फीमेल चुना। लेट्स गो। भाई जितना बताइए अभ्यास मिलेगा। सारे कैरेक्टर ठीक है, लेट्स गो। नाम भी कैसे दे रखे? अभ्यास, अभ्यास, व्हाटएवर जो भी है। बॉट The scent of the Abyss is getting stronger. It's not far now. डरते हैं क्या? Luna wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. अभ्यास बोले जो भी बोले, उसकी बहन का भरोसा। Cool it! Oh! Freeze! Don't get frostbite! अरे ये तो चाहिए था मेरे को, नॉइस। अरे नॉइस। गाइस लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो भाई। खाना बनाना है। Rain cutter.
Leave it all to me. Dodge this! What's the hurry? What's the hurry? Freeze! Dodge this! Oh, so soft. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. You tell me more about the abyss The order. abyss. हाँ It is इनको वो है. chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dane. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. वो जो ड्रैगन को मारा था उस ड्रैगन को भी तो पीएस ने वो कर रखा था. तो जस्ट Storm Terror. हाँ बेस ने ही कंट्रोल कर रखा था. यस. क्या कर रहा है बहन का भाई. कहाँ का भरोसा. रेंटिस का तो गया नंबर 1 ब्रांड. यही तो होगी मेन बकचोदी. इधर से पहाड़ चढ़ना पड़ेगा. कोई नहीं चढ़ लेंगे. यही तो पिटा था मैं गंदा वाला पहली बार में. ज्यादा बड़ा नहीं है पहाड़ ये है यानी कि. ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहे क्या.
now? Think Dean's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. ये स्पेल कर रखा है ना आँख के ऊपर. Lord of Wolvendom, great wolf king of the north, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, The wolf. nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. अभ्यास All वाले right, ने let's कर go रखा see if that Abyss Herald has stopped by here. है कि But अभ्यास where वाले do we की begin? Are हर you जगह standing here पक्षी because of खेल these strange bonfires, Dean? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. this Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. further clues up. Yes. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kinda scary. Let's beat them up first. Whew, that's that. Let's go check out that bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the Abyss. Freeze! Rain outlines your fate. Dodge this! This moment will be frozen in time. Ha! Cool it! Don't push your luck. Ha. What's the hurry? But I'm doing Fast and Furious. And there's another one of those bonfire spells. Looks like the Abyss really has been around here. Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. इंटू बड़ा मस्ती नहीं. Cool it!
पर है क्या वो? Dodge this. बंद करो। अबे ठीक है। Have you finished searching? I found lots of sign of the abuse or I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. मतलब ये भयंकर ड्रैगन के पास ले जा रहा है मेरे को। Freeze! Ah! Empty chest. Good for storage. बस तब वो ढूंढ रहे हैं बेस्ट हार्डर के। हाँ पता तो वो तो पता लग गया। ड्रैगन के पास ले जा रहे हैं। I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the east had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers Guys, that like करो Devon यार, first क्या got in यार, trouble like hundreds करो of भाई, years ना ago. कोई subscribe Don't think है, too much ना about it. कुछ है। Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Nice. लोगों के डिस्कॉर्ड पे सही नोटिफिकेशन भेज रहा है, मेरे डिस्कॉर्ड पे बैंक से नोटिफिकेशन नहीं दिए जा रहे। Look! There are lots of monsters gathered over there. Cool it! Dodge this! Freeze! हेलो एपर, हेलो ब्लास्टमैन, हेलो मोहिनी, वेलकम। सॉरी मैं वो वैलो की स्ट्रीम पे नहीं आई, कोई बात नहीं, बिजी भी हो सकता है इंसान भाई। इनकी Oh, so sorry. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Leave it all to me. Time to clean up.
Dodge this! Can't breathe. पक और इसमें भी लेट आई हूँ, कोई बात नहीं। Freeze! A minor setback. Body and mind. Cool it! और काम अभी क्योंकि काम बहुत था और कम अभी भी बाकी है, जा रही करने। Dodge this! हाँ कोई बात नहीं, फिर सोने जाऊंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके गुड नाइट, इट्स ओके, So डू in योर वर्क। the end, God we bless me. still Good night, couldn't man. find that Abyss Herald. Bummer. Thanks for joining. Bye bye, good night. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Like Where करके जा do रहे we हो। Thank know you, thank you. anyway? He no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh. और वैलो में भी कर दूंगी। ओके बाय 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 बाय। Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Yes. Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liu's Wanmin restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... I sense something familiar on that cliff. Okay. While you, Huh? What's familiar? I feel for the moment that previous time we came here too. A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. मतलब चढ़ाई करनी है। Oh, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. What's the hurry? विंड अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? But it doesn't feel like there's anything around here.
No No monster, monsters, no no people, people, nothing. nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. Traveling So, Dean, companion. What about you? What's your What's your favorite favorite place? Me? No longer remember. I no longer remember. I merely followed my इस traveling मिशन पर एक companion टीजर around on बनाया that था। journey. That's all there was उसमें to ही it. है कि यहाँ इस क्लिफ पर क्या हुआ Huh? था जो मेन कैरेक्टर को फील हो गया। A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found. वो ये तो even बहुत for a बड़े-बड़े single पैर है बे। dandelion. क्या है? Examined. ओए ये तो फर्स्ट सीन है बे। What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your brother? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Doesn't I touch it? Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? Related to me. You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Regardless, I have to go get to the bottom of. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. अच्छा इसको फील हुआ कि इसका भाई यहाँ पर है ओके गॉट इट Yes. तभी इसको वो And याद this आया is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Leaving already? हाँ इसको Only फील for हो गया now. Don't worry. We will meet again. तो वो मॉस्टर्ड में है After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. क्या मतलब है गोटी बिल्कुल चैप्टर 1 एक्ट ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेस्ट क्या है Go near the adventurous guide bulletin board. ये करना है क्या? ये साला रैंडमली कुछ भी यूज कर देता है. Amira, can you and lend the treasure hoarder or monster and Liu has been banded together and plan to go in. ये वाला करो या कुछ और करो? बचा. अब ये कर. We will be reunited है next May quest. Let's go. Sea of Cloud. बाकी क्वेस्ट ऑप्शनल है ओके. नेक्स्ट मेरे को अब नेक्स्ट बताते रहना ना स्टोरी तब समझ आएगी. मैं इतने दिन से पता क्या कर रहा था तो जो जिसमें एक्सपी ज्यादा मिलती थी मैं वो चूज कर लेता था. स्टोरी समझ नहीं आती थी क्योंकि एक स्टोरी के बीच में दूसरी स्टोरी दूसरा क्वेस्ट का स्टोरी बकलोल बनती होती थी भाई. अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरे को. ठीक है एक काम करते हैं कल से आप इवनिंग में आ सकते हो क्या ब्लास्ट में? कैनू है तो ओके.
Yes, yes. नहीं ये I have लैंड the है. Okay. audacity to go after ब्रांच anything. मास्टर एवेंजर. The 7 dragons, gods. No कोई ancient इंजन. artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? Huh? Oh, Traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? Commission? Hello. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. Joint 2 operation. big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. Yeah. But who is Big Sis of the South? You are correct. She's the head of the Head of treasure the hoarders treasure in hoarders. Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Just like the famous adventures allies, just like the great adventures. Ah, you met the living legend himself while you were in Mondstadt. Correct. The Grand Thief is someone just as renowned as him. Okay. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Should I say this? It will be started. यार यहाँ के मैंने टेलीपोर्टर ही नहीं अनलॉक कर रखा. Fuck. तो जाता हूँ फिर इसको ऑन करूँगा फिर F बे. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. घूम रहा है. जगह कौन सी है? Freeze!
देख ब्रो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तेरे से लड़ सकूं, ठीक है? इग्नोर कर दे मेरे को जान के। गाइस लाइक्स एनएच के। How fortunate. लास्टमैन भाई चले गए क्या? नहीं हूँ। ये जगह कौन सी है? जगह तो बताओ, उसका नाम ही नहीं दिख रहा। ड्यू की है ये? ओके ड्यू। Explore cell of the abyss. Cell of the abyss recommended. Okay. यार की क्या मतलब फाइट हो? यार आज बंदे ही नहीं आ रहे स्ट्रीम पे यार, मजा नहीं आया। हाँ गए सब। नोटिफिकेशन नहीं गया क्या आज? There are signs of treasure hoarder activity here. यार मैंने They must इसको have come to these ruins. लोग नहीं Let's go करा। deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is क्या reliable. नहीं लीव कर सकता हूँ क्या? मैंने उसको रेजर को रिवाइव ही नहीं करा। फक। या फिर इससे ही लड़ो। हाँ कर सकते हो लीव। लीव कर दो। रिवाइव करना पड़ेगा भाई यार, वो मेन कैरेक्टर है मेरा भाई। क्या था बे?
हो भी गया। देख रहे हो कितना कितना स्लो प्रोसेस है मेरे लैपटॉप का। वो हो भी गया और मेरे को वो भी नहीं हुआ, लोडिंग भी नहीं हुआ मेरे लैपटॉप का। पहले टेलीपोर्टर भी अनलॉक करना है, ये सारे ऑन है, ये ऑन करना है। अच्छा टाइम कर लेंगे यहाँ से। बस तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज कोई है नहीं, हाँ सब बिजी है। नहीं कहाँ है? There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. Let me read you a verse. This moment will be frozen in time. More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you. Fuck. जाना था, मुझे लगा बहुत कुछ तो सीन होएगा यहाँ पर। है This looks like a person.
Could it be the Grand Thief? Grand Thief, okay, yeah. Why is he in that position? Is he praying to something? What? That's... Statue of 7. Why is the statue of the 7 hanging upside down? उल्टा लटका हुआ है और उस पे कोई The स्पेल हो रहा है. statue's hands. Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's... Hello? Are you okay, mister? He's dead. Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here, and fast! We should report back to Ganyu and Lon. Now what? अब आ गया. We can't stay here! Quick, run! ओए You cannot spy on the secrets of the Abyss. ये बहस का आदमी है. You have come here. You have seen our secrets. For this, pay the price. you must pay the Abyss price. hard. Herald. As a herald, I will mete out your punishment. An Abyss तू लड़ेगा. साले चाइल्ड को तो धूल चटाया मैंने. Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So you were with. You are with Dainsleif. That constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss is unstoppable. Dude. What is this power? Pirates never seen it before. Careful, please don't get cocky. Freeze! Time to... अरे यार इसका ये कितना स्लो आता Body है. and mind. Dodge this! Tal, bro. This power, it seems familiar. हो गया. बस इतना ही दम था. See. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. क्या मतलब कल्टी? अबे वो भाग गया. What a tough battle. Tough battle? Are you okay? Oh, such a strong enemy. बच्चा था बे. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? साला गोटी कल्टी मार गया. Huh? What is it? What are you thinking about?
इतना ही दम था, मुझे लगा भाई अच्छी फाइट होगी भाई। We're near the exit now. आयल से लड़ा Let's तेरा get भाई, out of this scary place before something even more dangerous shows मुझे up. ना गॉड के बंदे से। Leave the traveler and payments in the ruins. Okay. हो जा लोडिंग। So, ये फिर आ we गया? meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite Quite strange. strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. Actually, the Abyss Herald wanted all uncounted. There was something strange than the Abyss Herald in. The traveler tells that the Abyss stranger statue and okay. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way! We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. I Come, thought I was the let's one catch who up to it. commissioned. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. Just go. ये टेलीपोर्टर अनलॉक करके जाता, ठीक है, ये काम आएगा। Have to cross. हाँ, टेलीपोर्टर काम आते ही है ना। अब फ्री हो जाए तो ब्रो, मैं फ्री होऊंगा अब सीधा 1:30-2 बजे, उसके बाद डिनर करूंगा, उसके बाद थिंक फॉर स्लीप स्लीप। यार तुमको आफ्टरनून में करवा सकता हूँ जो सेटअप करना है तुम्हें। मैं सैटरडे नाइट को बोला था, तुम बोल रहे मैं और नाइट आउट पे निकल गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ।
किधर गया स्टार? यहीं तो दिख रहा था। हाँ, आ गया। पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा सही में। अरे यहाँ से चढ़ ले। अबे, और क्या है? ओके, अपना काम हो गया तो अपन चलना है अपने को। एक तारीख बाद में देखेंगे ये करते। अरे Oh, so sorry. Ring cutter. ये मैं क्या भरोसा। Dodge this. Freeze! What's the hurry? Cool it! अरे भाई जियोन, अरे जियोन भाई वेलकम। Dodge this! अरे तो नीचे आ, नीचे आ। Freeze! Howdy bro, I'm good, Jion bhai. Those abyss What mages about just you? now. Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that Guard. so? The traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. Well, we probably were looking for stuff like that. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. Yeah? However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? Yeah, Master Diluc done that before. You should be. I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Yeah? Or rather, these Abyss mages likely fear something else much more than they do a painful interrogation. Paimon is getting goosebumps thinking about all this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. बराबर।
Blackman, I have Kazua's and so shit. I pick Venti. Will that be useful? And Hydro, I have only Oli Barbara, so just a little confused. उनके भी अपने को तो कुछ समझ नहीं आएगा. What's the hurry? No, my sword! Don't get frostbite. Witness the power of Cool it. Don't push your luck. Freeze. Rain outlines your fate. Lupica! My Lupica! Oh, so sorry. Let me weave you a verse. Dodge this! What's the... As a good knight should. Freeze! Cool it! Time to act. What's the hurry? Freeze! Kokumi is a good Hydro if you will build Besides the Abyss a Order, team that Ruin Guards with sure a are Hydro. active Okay. around here. Okay, then I'll go Seems for wherever we find Sano an and Newbie. Abyss Mage hideout, Guys, there's if you are new, often don't a forget bunch to of like, Ruin share, and Guards roaming subscribe, around guys. too. Is that just a coincidence? Or... There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern, time is just waiting for those seeds to sprout. I only heard about you by chance. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khaenri'ah. Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name! Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... Huh? Because I have memories of You Khaenri'ah. have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. इसको कैसे पता?
Is that so? Well, Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Well, I can't hide from him any longer. Then Catherine is worth a shot. The person who woke me up. The travel tales about the sea of. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. It seems your brother woke up first. But the question is, how how long before you? And then your brother told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? He said that? एक मिनट इसका भाई इससे 500 साल पहले जग गया था मेन कैरेक्टर 500 साल से हेड थी इसलिए कैरिन की मेमोरीज है अच्छा आई होप दे पुल्ड जिंकी सून बैनर हुकुम हैज लिमिटेड आवर बट ही कैन बी गुड टू इसका भाई इससे 500 साल पहले जग गया था और इसके भाई ने इसको जगाया The expression of Karen is said that, okay. That was the guy at the time. That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your brother must have understood this world better than you did because he woke up first. मतलब 500 साल पहले इसका भाई जग And गया it था was उसको ज्यादा shortly पता after होगा that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. I'm right. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your brother? It's the second most promising lead, despite only having place named Go. Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god, not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans, an unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. But the next time I went to yours only, I need to explain Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search.
Fuck. क्या है भाई? जंप पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा है? वो ग्लाइडर क्यों नहीं खोल रहा जंप के साथ ही? और ऊपर से कूद रहे, ऊपर चढ़ जाए। नहीं चल रहा है यार। यहाँ तो कोई टेलीपोर्टर ही नहीं है। उसके यहाँ से यहाँ टच 7 चलते हैं, उसको वो करते हैं। जस्ट बॉट बैक क्लिफ पोलम फ्रॉम हो गया। ऑल बैकली वेपन आर ग्रेट टू बेस्ट 4 स्टार फॉर F2। मेरी कमर के बैंड बज गया। जब look for the trash of the abyss order. Okay. Hello Ayush bhai, welcome. क्या हाल चाल? Long time no see. First I'll collect a few heroes and I'll wish for weapon banners later. Fill your cano for it will be Endo MC. अब चोरी चल रही है इनकी। Hello Ayush. Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Saved 200 wishes from weapon banner. Tillers? What That a is pretty strange name. unlike character banner. They were farming equipment, so what with your... It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. अच्छा ये The weapon land is मतलब not to ओके be ये tilled with कैमरे का farming weapon है, tools, ठीक है, but समझ rather गया, is to समझा। be fought for with थोड़ा बहुत steel and समझा। blood. This is how the field tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, 240 for these weapon masterless field Beauty tillers Warden went को हाँ मैंने completely out of register control. कर दिया, देखा मैंने। Radiant is They OP. wandered All aimlessly God over the character. centuries, I don't gradually have to- spreading to every Battle corner Royale of का Tavat. बाप game हाँ। Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Ray outlines your fate. Don't get frostbite.
not good. Not good, bro. Dodge this! I must leave no stone unturned. Witness the power of Gugwa. Freeze! Fuck. This is not good. Don't push your luck. Rain outlines your fate. This hole will be frozen in time. तू पहले शांत हो, इसको तो मैं देख लूं। I taste poop. पीटी दे दो बहन से पी। चल। जेंशिन इम्पैक्ट मल्टीप्लेयर हाँ पीसी में तो खेल रहा हूँ मैं। नाइस ग्रेप पीसी में भी है ये गेम काफी इंटरेस्टिंग है अच्छा गेम है। This talisman seems connected to the Abyss Herald, but why would an Abyss mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. Yes. What? Is that what it says? Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. Gaming channel It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate weaving 2022 machine? जनवरी में है 22 तो चला गया Loom of Fate what's that it's literally a fate weaving Abyss name confirmed those ruins it's related to the statue From the horrible feeling Paimon's been getting 2023 में those अच्छा eerie ruins are ठीक है super likely to be related to this fate weaving operation. So Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. माफ करो An ambitious operation, but some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? अभी शुरू You करो mean इतना that वेट god in the ocean? नहीं कर सकता अभी उनको काम है नवंबर उनका वेडिंग है तो उसके बाद ही करेंगे वो अभी बिजी है उनका वो शेड्यूल The overload of a vortex you mean that god in the ocean right the last time okay was that just was by Jade Chamber है What do they want with Osile? Would it be the same as वो with Divolin एक मिनट Divolin तो Storm Terror था I know of your past heroics regarding Divalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Divalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? अभी
टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं मिलता, ये चैनल में काम है बहुत अच्छा। Any character can does enough damage to clear the game. The girl हटाओ, she does a lot of damage. इच्छा तो है अभी करने का, पर अभी काम भी तो है ना। हटाओ does big one shot damage too. Okay, yep. बस लाइक कितने लाइक्स हो गए बताना जरा, मेरे को दिखती नहीं। एक तो मैं फोन में चैट पढ़ता हूँ, बहुत छोटी दिखती है, लाइक्स वगैरह तो दिखते ही नहीं है, रिस्टार्ट करना पड़ता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम है राइजन भाई, अब इसको फोन में पीसी वालों के साथ खेल सकते हो, पीसी वाले फोन वाले के साथ खेल सकते हैं। बट ये है कि जिस वर्ल्ड में आप खेल रहे हो उसमें कोई आपका दोस्त आता है ना, तो आपको मिशन करने पड़ेंगे, वो बस आपकी हेल्प करेगा, उसको बस मटेरियल्स मिलेंगे अपग्रेड करने के लिए। छोटा खेलता है क्या कोई? नहीं, छोटा देखना पड़ेगा कैसा सीन। तो इसमें जो तुम्हारा मल्टीप्लेयर दोस्त आएगा वो तुम्हारे साथ मिशंस नहीं कर पाएगा, एनिमीज वगैरह मार पाएगा, एक्सप्लोर कर पाएगा, और जिसको उसको भी मटेरियल्स मिलेंगे पर आपको ज्यादा मिलेंगे। बट ये जो क्वेस्ट होते हैं ये इसको आपको अकेले ही करना पड़ेगा, ये स्टोरी है एक पूरी। तो चल रिएक्ट टू बिल कायरो एंड हाइड्रो। मैं खेल रहा हूँ, सीख रहा हूँ डोटा। ओके, Ilya is just physical. Okay. Sound about this nickname keep. Very few people today truly understand the civilization of Kanria. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Paimon gets Oh, Paimon gets all it! those All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. I understand. Okay. हार्ड है गेम, मैकेनिक्स डोटा का बहुत अच्छा, 500 टाइप्स पावर्स है उसमें, उतना कैरेक्टर है कम, व्हाट द फक, इतने सारी पावर्स। अच्छा, तो वो अभ्यास जो है वो मैकेनिक गॉड बना रहे हैं ब्लास्टमैन भाई, मैकेनिकल गॉड बना रहे हैं, इसलिए वो सारी ये चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सीन है। They haven't found it yet. We still have time. Let's find the eyes before they do. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. Okay. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. 6 month लगेगा सीखने में है, 6 महीने। I want to build piano powerful. Genshin भी खेलूंगा, अच्छी गेम है, इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी। मैं इसको स्किप कर रहा था, तो कल मैंने उससे फाइट करी, क्या कहते हैं, एक बॉस से, वहां तक कि मैंने स्टोरी हिंदी में देखी। काफी इंग्लिश में, बहुत ज्यादा इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा इंग्लिश है, इसलिए मेरे को हिंदी में देखना पड़ा समझने के लिए। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे ये पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। स्टोरी गेम है, थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा। स्टोरी के साथ नाइस, काफी अच्छी स्टोरी है भाई, मतलब अगर आप देखोगे स्टोरी ना, मजा आ जाएगा आपको। Celestia, to pull the device. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? मैं बिलासमैन भाई को बोल रहा हूँ, साला हिंदी में इसको क्या कहते हैं, डेवलपर को मैसेज कर करके परेशान कर दो। We want Genshin impact in हिंदी। We want Genshin impact in हिंदी। फक, हिंदी का वो लेके आओ तुम।
The statues look like an anemo aircon. Should we take a search for this about it? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. ये लेवल 30 बोलते। चर्च जाना है हमें क्योंकि वो वहीं पे मिलती है। फिर पता नहीं क्या नाम जीजी है। जीजी क्या अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है क्वेस्ट में खतरनाक वाला कुछ आने वाला है इसके यहाँ। गट्स फीलिंग आ रहा है यार। 12:15 बज गए। फौजी भाई का क्या ही बोलूं, अभी भी बीजेपी स्ट्रीम कर रहे हैं। तो वो शाम को वो कर रहे थे, गेटिंग ओवर इट कर रहे थे शाम को, देखा था मैंने। फौजी भाई का कई बंदे बीजेएमआई कर रहे हैं, उनको उसी में मजा आता है भाई। एक्चुअली उनका क्या है, huge statue, a grandiose cathedral. the The people people of Mondstadt Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... That's the wrong number. Yes, I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? ये लोग ना एक्चुअली क्या है राजन भाई, ये पता है क्यों खेल रहे हैं? इनके ना फ्रेंड्स हैं बीजेएमआई में, इसलिए इनको मजा आ रहा है अभी खेलने में। इनको फर्क नहीं पड़ रहा इनका चैनल कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, व्हाटएवर दे थिंक अबाउट, बट इनका अभी फ्रेंड्स है इसलिए खेल रहे हैं। अगर कोई नहीं होता ना तो ये नहीं खेलते, लाइक मेरी तरह। मेरे पास कोई खेलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे उसमें मजा भी नहीं आता, मेरे को कंटेंट भी नहीं मिलता उसमें। रैंडम के साथ कितना कंटेंट बनाओगे, चूतिया आते हैं रैंडम भाई, इसलिए मैं नहीं खेल रहा, वरना मैं भी खेल सकता हूँ। और मेरे को कोई नई गेम्स ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने बुक गया। अब मैं सोच रहा हूँ वैलो भी बंद ही कर दूंगा, दोस्तों के साथ हैंग आउट हो जाता है खेलते खेलते। अरे मतलब हैंग आउट भी क्या, दोस्त भी तो चूतिए मिलते हैं भाई। मेरे तो चूतिए थे पहले जो थे, जिनके साथ मैं खेलता था मतलब लाइक 2018 से राइट साइड किया। मैं अब कल से सोच रहा हूँ वैलो भी बंद कर दूंगा, सीधा जेनशिन की स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा, 4-5 घंटे सीधा जेनशिन। भाई इसकी स्टोरी कंप्लीट करनी पड़ेगी मेरे को, वरना अगर मैं स्किप करके दूंगा घंटा नहीं समझ आएगा, सिर्फ खेलते खेलते रह जाऊंगा। बाद में जब इसके पार्ट्स आएंगे या फिर ये डेवलप हो जाएगा गेम ज्यादा अच्छा, तो मेरे को घंटा नहीं कुछ समझ आएगा। मैं भी लाइक बेंच मैंने क्या किया है इतने दिन, तो इसमें मेरे को टाइम देना पड़ेगा। अब देखो 10 बजे मैंने स्टार्ट करा था, एक क्वेस्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ 2 घंटे में, तो इस गेम को बहुत टाइम देना पड़ेगा, स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, जो भी गेम्स इंडिया में फेमस है उस गेम को छोड़ के कोई भी गेम खेल लो अगर चैनल का को बड़ा करना है तो। एग्जैक्टली आई डोंट हैव एनी quest to from past few days, all complete, I don't complete hangouts, तो बोरिंग करो। दौर में उल्टा जाओगे तो तरक्की करोगे, बराबर पीछे से शॉर्टकट लेंगे। चलो इसको कंप्लीट, बट वी विल डन एवरीथिंग एल्स टुगेदर। Aren't you curious? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. कोई नहीं, टाइम लो, अच्छे से अपने आप कैच अप कर लोगे। अब मैं क्या करूँगा, जो मैं स्टोरी यहाँ पर देख रहा हूँ जितनी कंप्लीट करूँगा उतना मैं किसी की एक हिंदी वीडियोस देख लूँगा, थोड़ी बहुत तो समझ आएगी, कुछ नहीं से मैं दूर से बाहर चला गया लोली तो मैं दूर से बाहर चला गया। उसका देखा क्या राइजन भाई, स्टार का देखा क्या, गजब डारा स्टार, पता
आजकल रेड वेड करवाता है 200 के चैनल पे, ठीक है क्या? वेरी प्रोफेशनल। 200 के चैनल पे 1 के चैनल पे रेड करवा रहा है। आधे का कोई फायदा नहीं भाई। आई हैव बीन सीइंग हैंगआउट्स द प्रीमो जेम्स बैंक फॉर लेटर और एनर्जी। नो यूज सब सर्वर के लिए आते हैं, वीडियो कोई नहीं देख। हाँ वो सिर्फ कोड लेने आते हैं, खेलने आते हैं, बस दैट्स इट। अब बता रहा हूँ, अगर वो लाइव स्ट्रीम की जगह एक वीडियो डाल देना और उसके 100 व्यूज आ जाए उस पे, मैं छोड़ देगा यूट्यूब। जीरो प्रॉफिट है इन फ्यूचर, मैं छोड़ देगा यूट्यूब भाई अगर उसने एक वीडियो डाल दिया और उसके 100 व्यूज आ गए। बोरिंग हैंगआउट्स ब्रो, because they don't have you, don't know you. Okay, you don't, yeah, having me tag along, would you like to make suspicious? You don't think you will be popular among the sisters? Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. मेरे माथे में When कुछ a और प्लानिंग है। non-believer steps onto 2023 में holy बहुत कुछ बदलने ground, वाला the है। result is never pretty. Hopefully I've नया never ईयर जो है received थोड़ा the अच्छा favor हो। of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Rocket speed होगा channel. And Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. okay, हमें खुद ही I पूछना should पड़ेगा, ये warn you नहीं about जाएगा। one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. एक मिनट राइजन में पढ़ रहा हूँ मैं चैट। डोंट अपलोड एनी शॉर्ट्स, एक भी शॉर्ट्स भूल कर के भी अभी मत डालना, ठीक है? शॉर्ट्स बंद, शॉर्ट्स तो मैं डाल ही नहीं रहा। मैंने एक वीडियो बनाया कल जो मेरी बॉस की फाइट हुई थी, उसकी एक वीडियो डालूंगा जो कि है अराउंड 30 मिनट्स की, 3 मिनट्स की है, वो डाल। टीटीआर पे पूरा उल्टा हो गया लॉन्ग और शॉर्ट्स का। या मैंने शॉर्ट्स काफी दिन पहले बंद कर दिया, अब मैं वीडियो डालूंगा एक 3 मिनट की कल। उसमें चाहे मेरे 10-20 व्यूज आए फिर भी चलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द वोंट इवन एक्सेप्ट इन co-op, just trying to help low IR players. Exactly. हाँ ओके, शॉर्ट्स भी डालना। ओके ये हो गया। टॉक टू बाबरा। बाबरा तो मेरे पास है, मैं निकाल लूँगा। पीसी गेम्स का साइज, गेम का साइज, अच्छा इस वाले गेम का 38 GB, नहीं 38 GB है, कितना है? नहीं 38 GB नहीं, कुछ 400-500 MB का तुम्हारा लॉन्चर डाउनलोड होगा, उसके बाद 18 GB शायद से। ब्लास्टमैन भाई बताएंगे। ओ भाई नहीं कब, मैं ब्लास्टमैन भाई बताएंगे कितना GB का। ब्लास्टमैन भाई मैं भूल गया। मैं गेम के ग्राफिक्स भी तो अच्छे है ना, ओपी। ये तो मैं लो करके खेल रहा हूँ। 18 GB फोन का है, पीसी का कुछ 40 GB है। बहन शुरू को अरे यार क्रोम क्यों खोल रहा हूँ मैं, गांजा फूका। एक मिनट देख रहा हूँ मैं। हाँ 40 GB का है, 43.7 GB का, वही 44 GB लगा दो। 44 GB है।
ओहो ऑसम ग्राफिक्स मैंने लो कर रखा है ये हाई करूंगा तो बुन फट जाएगा लैपटॉप का मेरा और जो मेरे को स्ट्रीम पे दिख रहा है ना जो तुमको स्ट्रीम पे दिख रहा है मेरे को वैसा नहीं दिख रहा मेरे को डल दिख रहा है मेरे को जो गेम में दिख रहा है मैंने डल दिख रहा है पर स्ट्रीम पे अच्छा दिखेगा काफी अच्छा व्यू है इस गेम का हाँ Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. इस गेम का अभी एक नया वो भी आने वाला अपडेट 28 तारीख को आईपैड प्रो में तो मस्त लगेगा हाँ उससे डायरेक्ट स्ट्रीम करोगे ना अगर आईपैड से जैसे स्ट्रीम चैम्प से तो मस्त लगेगा बट अगर आप मिरर करते हो फिर क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा एकदम ही ग्राफिक्स में अगर मैं आईफोन से स्ट्रीम करूंगा ना अपना तो वो अच्छा दिखेगा बट मैं अगर मिरर कर रहा हूँ तो क्वालिटी डिक्रीज हो जा रहा है मैंने ट्राई करा था मिरर करके खराब हो जा रहा है सीधा आईफोन से इंस्टॉल करता मैं कल ओके आईफोन में तो हो जाएगा 18 GB का एशिया सर्वर में खेलना हाँ इन्होंने अभी इनका एनीमे भी लॉन्च करेंगे ट्रेलर आया है बोल रहे और नए अपडेट में भाई नए नए विलन्स भी आते हैं नई स्टोरीज भी आते हैं डायरेक्ट ही करूंगा फिर हाँ मिरर करके पीसी से मिरर करके क्वालिटी खराब हो जा रहा है डायरेक्ट सीधा स्ट्रीम बहुत सही हाई ग्राफिक्स करके खेलो तो जो सेक्सी मजा आता है ना भाई मैं फोन में देख रहा था आईफोन में डाउनलोड कर रखा है मेरे फोन में भी है एनीमे आ जाएगा नेक्स्ट ईयर तक शायद It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? What's that? Field tiller. Field tiller. What does it do? What does it do? Nice. Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. मेरा लास्ट वीक का वीडियो 1 लाख क्रॉस कर गया नाइस सब्सक्राइबर अब धीरे बढ़ रहे हैं ना पहले के मुकाबले मैं देख रहा था चैनल देखा था नाइस A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! अच्छा पेमेंट दे रहा है ओके गेमिंग में फोन व्यू का ज्यादा फायदा है हाँ धीरे लॉन्ग से आ रहा है हाँ ये जो गेम है जा रहा है थोड़ा सा ना बाहर इंडिया से क्योंकि इंडिया के बाद ये जियोन भाई इंडिया से बाहर क्या वेयर आर यू फ्रॉम जियोन ब्रो भाई ये अमेरिका सर्वर में खेलता है आई डोंट नो ये इंडिया से या इंडिया से बाहर क्या बट अमेरिका सर्वर में खेलता है ये जेंशिन ही खेलता है जियोन आर यू देयर पर डे 70 to 80 आते हैं नाइस फिर भी ठीक है एवरेज से तो अच्छा है Of course. Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? इंडिया बैंगलोर से ब्रो अरे भाई तो भाई अमेरिका सर्वर में क्यों खेलते तुम मतलब फक हाई पिंग पे लॉल ड्यूड Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. टाइम लगेगा वो Other strange stories? I'm not sure. Not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records.
Oh, the Oh, tyrant the party. Tyrant's Final Fury? That's from Oh, other no, time. that's from another time. Probably Probably unrelated. unrelated. पता भाई, related कर लेंगे हम. The Tyrant's Final Fury. Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. शायद. Many, many years ago, there was There a was a time when time when balls of balls fire fire would rain rain from the from sky sky whenever whenever anyone anyone approached old approached the Mondstadt. monster. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! Just to chill with girls over there. Lol, dude. लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर. Guys, likes हो रहेगा. English girls, yes. People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever there able able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable in the eyes of the Church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. You had to play late night to talk to any of them on America server. The thing is, once bro, there are a lot of Arabic girls in this server. That server. Nice. लड़की का चक्कर भाई. ये सब्सक्राइब कोड राइजन भाई ठीक है भाई. केडी वर्जन मोबाइल ठीक है राइजन भाई. I have few friends. Okay. Perhaps it was something else that caused the disaster. ये मैं ही हूँ, मुझे पता है. You should tell them ना my channel, Zion bhai. You should tell them to buy channel and ask to play with me. My new channel, nice. Because I need girls fan following or what? Zion. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. Create a account in America server. No, they have to come in India server, Asia. Arabic लड़कियां American server पर खेलती है. हाँ, वही मैं सोचूं. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. Rosaria. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Huh? Those monsters? ये भूतनी से क्यों लग रही है? एशिया में can we get Angelina Jolie on? ठीक है भाई. एशिया में चाइनीज जापानीज नेम वाले आते हैं, बात नहीं करते और चले जाते हैं बराबर. Arabic and Spanish girls are top most in the server, guys. ये ऐसी ही है रोजारिया. अल्लाह भूतनी है क्या? ये राख में से उड़ के आई है. Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Need कर दो Chinese को. And there are 4 Indian friends in the server too. Can we kill teammates here? नहीं. We can't kill teammates, but we can burn them. Yes, आग लगा सकते हैं उसे. Then I will go as well. मेरे को जाना. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Don't worry, I will go help. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay.
If the Oh yes, I Underground will Knight will be be there, then. dead then. But please, everyone, Uh, be careful. May the Animal Archon protect you all. एनिमो आर्कन बराबर। मेरे को जान फाइट चल रही है वहां पर। क्या मतलब एग्जिट मारना? अच्छा उससे बात करनी, माफ करो माफ करो। ऑल विल रिपोर्ट मी, नोबडी विल रिपोर्ट फॉर बर्निंग। हाँ रिपोर्ट नहीं कर सकते इसमें शायद से। यार मेरे ईयरफोन्स क्यों हिल रहे हैं? फक, दे विल बर्न यू बैक इन रिस्पॉन्स। बराबर। I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? Iron friend, Bill from Kerala, bro. She was like a lot of show off, so I just cut off. Very nice. This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Devalin? Not again! वुलवंडम। अच्छा वुलवंडम में तो वो वुल है। What is a whale? लड़की है वो। एक मिनट। Abyss order going to Wolven for any way? Are they looking to do the same they did with no? क्या मतलब ये उस वाले वुल पे भी वो करने जा रहे हैं स्पेल? No, that's not likely. A whale is a player who spend a lot of money. Okay, that should be welcome on games. Unlike Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. उस वाले बुल पर भी अटैक कर दिया भैन की इनकी। चल जल्दी चल, गाड़ी निकाल। पास में गाड़ी निकाल। तेरे बुलबू पे अटैक करा इन्होंने। थोड़ी देर में माफ कर। फाइट होगी इससे भी डरते हैं क्या? अरे अभी उसको हराया मैंने, क्या कहते हैं, अभ्यास को। कल मैंने उसको हराया था, चाइल्ड को। या बट आई वुड लव टू डोमेन इन 5 सेकंड व्हेन आई एम ट्राइंग फॉर एन आर्टिफैक्ट। तेरा भाई किससे कम है? बहुत टफ लगा था मेरे को तो इसको मारना शुरू में। अजी कद्दू मेरा, मैंने तो यूं ही मार दिया था। चाइल्ड को भी कुत्ता बनाया, अरे अभ्यास को भी मार के आया मैं। अभ्यास जो भी है, व्हाटएवर जो भी बोलते थे। डरते है क्या? तेरा भाई कुत्ता बनाया था भाई, जब भी तो इसको वो करा मैंने, क्या कहते हैं, रेजर को। अब मेरे पास अभी भी भाग यहाँ से, बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा है रुको। अबे अभी तो हील करके आया था मैं। What's the hurry? Cool it. क्या मतलब इस पे आग लगानी पड़ेगी मेरे को? I reached AR 55 within 3 months, bro. I don't have much 5 character. Okay, that's normal time to reach AR. 2 lakh plus. Yep. जोली की शील लगाकर मारो अपने आप हील। बराबर। इसको जलाना पड़ेगा, रुको। इतनी मेहनत कर लिया था, थोड़ी और सही।
will come in handy. How many 5-star Xeon? यहाँ कहीं वाइट स्टार दिखा रहा है, नीचे होगा, इग्नोर करते हैं अभी, पहले वुल्वरडम में चलते हैं। Oh shit. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Five. I think it's okay. There sure are a lot of enemies around here. Itto, Kazuha, Dulik, Jean, and Kelly. I don't use Diluc much, and Kelly isn't built yet. I use Jean just to heal. The closer we get to the target, the more enemies there are. We should hurry and Fits find the Abyss Empress Order's Force. Yeah, style. let's go! I'm not going going any any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't... Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven, or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. I can kind of see him coming from. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Jean aa gayi. Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas.
But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Divine. bro, editing It's not too okay, surprising bye-bye. that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. Thanks for joining. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Editing करना है, refresh. Honorary Description Knight, करना है, okay. please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit. Welcome, Alpes bhai. My He eyes does not scratch often see wanna hear people, my story. but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. King for the Great Wolf King of. यार इससे fight होगी क्या? It doesn't matter how many 5-star you got, you still want more like me. More like you what? 5-star. इससे fight होगी क्या? Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! डर तो मैं हूँ। अब्बास हेडल से होगी दोबारा। अच्छा तो वुल्फ पे नहीं होगी ना, ठीक है। फिर तो इनकी बहन की अब्बास ऑर्डर को एक बार पहला है, दोबारा पहलने में क्या है? You not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? इतनी बार भी मार खा के मानता He's नहीं in a lot of pain. और पिटेगा फिर। Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. Time for another round with the Abyss. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. तू तो गया, तू तो जाएगा। क्या बहन से 12। Freeze! Leave it all to me. No, my sword! Rain cutter! Fire running bro. Cool it! Annihilate! Steady us. This moment will be frozen. Rain outlines your fate. Dodge this! I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would.
Let me weave you a verse. Cool it. Dodge this. ब्रो तेरे को जमने से फुर्सत नहीं दूंगा मैं। Leave it all to me. तेरे को जमने से फुर्सत नहीं दूंगा बोला। The end is nigh. यार ये आने में बहुत टाइम लग रहा है इसका। Rain outlines your fate. Steady as stone. What's the hurry? I taste blood. Change is a character. The world will fall. Leave it all to me. Oh, so sorry. The end is nigh. The abyss shall rise once again. Cool it. तुम भी आने लगा। The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It disappeared again. अबे क्या है लड़ तो ले ढंग से। At least we stop them time. Sure be run away quickly. Thank you. You came just in time. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. ज्ञानु इसलिए one of the best yes है। ये स्किल और अल्ट पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। अच्छी मेरे को मांगता है। I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. तभी तो मैंने खोल ली। You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget.
बस 4 It शॉट entered मारो और into काम my करो। proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? इतनी में भूल गई। Anyway, बाबरा ने this बोला pretty था। much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. ओके, ये करेंगे बाकी कल, ठीक है? अभी हम वो कर लेते हैं। Oh, that's why 68, right? Oh, I see. तो खैर कुछ होना नहीं है। अरे मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। ये हो गए 4 27 2 ये चाहिए, तो मैं इसको बिल्ड क्राफ्ट कर सकता हूँ। या नहीं हो सकता। जिंक भी नहीं हो सकता, और नियोली तो हो ही नहीं सकती। And New Morgan comp will be great. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? इस लाइक करो यार। हाँ कर लो अब। भाई अबे we hit 15 likes. उसके बाद एक और बार लड़ना है अभ्यास शेर से। कोई नहीं, और Ad मारेंगे। Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. बनाएंगे साथ।
I craft them. Ancient alchemy truly is fascinating. अबे कहाँ गया वो? I need to. If I get good artifact like theater damage and it will be roll F and HP. अबे 10-10 करके बढ़ रहा है इसकी भाई की स्टैंडर्ड विश मिली। अब दोबारा करने के लिए दोबारा मेरे को चीज ठीक है भाई, मैं कल आता हूँ। 10-10 करके ही बढ़ता है, पहले तो 20-20 करके बढ़ता था। एक एस्केडेंट में 20-20 करके तो नहीं कर सकता इसके वेपन क्यों कैरेक्टर। ओके मेरे को ये 3 चाहिए, ये चाहिए 16, ये भी चाहिए, वो तो कतई बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके सिल्क फ्लावर है 12 चाहिए, ये है ये 3 नॉट पॉसिबल। लेट्स गो। थोड़ा तो अपग्रेड हुआ है, रेजर पावरफुल हो गया। किस काम आता है? इनको यूज कर दो क्या सबको? क्या है ये? तो वैसे भी डीपीएस है 4 स्टार में आई गेस। अरे यार ये तो दिखाना है ये। What is that? ये तो ठीक है, ये 5 है, मेरे को करने पड़ेंगे। ये कैरेक्टर लेवल अप में काम आती है आइटम, ठीक है। I smell rabbit. लेट्स पुल विशेस। कितनी विशेस हो सकती है देखते हैं। एक ही लॉल यूज। पहले स्टैंडर्ड वाली करते हैं, एक है। स्टैंडर्ड बैनर पर करो, कर तो दी। आइस माउंटेन पर जो रेड ट्री है 27 रेड स्टोन्स है ड्रैगनाइट ड्रैगन स्पाइन के ट्री के पास। तभी है क्या भाई? Hungry. वो काम Let's पर hunt. मुझे पता ही नहीं। आइस वाला ना, ठीक है। ये है ना ट्री, तो कॉस्ट बेरिंग ट्री ये वाला। हाँ ये ओके, टेलीपोर्ट में। लेट हो गया यार काफी।
160 डिजाइन पड़ी है, यूज ही कर लो। अरे अभी टाइम नहीं है भाई इतना है। वैसे भी मैं स्टोरी कंप्लीट कर रहा हूँ तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेट हो गया ऑलरेडी। कल से मैं थोड़ा जल्दी स्ट्रीम दो। ये मिलते कैसे हैं? पत्थर तोड़ के? Aggressive from the color character like and is unique to recognize and make your idol natural growing. ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ये तोड़ के मिलता है क्या ये? स्टार जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलता है। अच्छा, मुझे लगा है पत्थर तोड़ के मिलता है। लॉल, नहीं ये पत्थर नहीं। ओके, मैंने इसको आग में क्यों छोड़ा है? इसको वापस सिटी छोड़ा, कल यहाँ वापस आया तो ऐप हो जाएगा मेरा। मैं तो अभी जाना नहीं, पता चला मिशन कंटिन्यू कर देगा। एक विश क्यों मिली? 2 मिलनी चाहिए ना। क्या कुछ खतरनाक मिलने वाला है? 5 स्टार बेल मिली है। बेल दूसरे से बुक्स मिली है। बेल मिला है। बेल क्या करने का इसका? तो कुछ मिलता ही नहीं। बेल डोरी के लिए बेस्ट वेपन है। डोरी यूज कौन करेगा? क्या लॉजिक है भाई? डोरी यूज ही नहीं करता मैं कहाँ। दे भाई डोरी को, दे भाई तू, दे भाई डोरी तू ले। खुश रहे डोरी, तुम्हें तुझे नहीं करता। नेवर माइंड। कैन आई चेंज अदर पार्टी लाइक दिस? ठीक है, ये भी ये 4 ऐड हैं। ये 4 ऐड हैं। Oh yeah, rock on! चल पर ओके। I'll take care of it. क्या गोरू पावरा सायु और क्या रहेगा? लीजा है। लीजा एडेड है। 4 4 8। कौन रह गया भाई? 10 टीम बना सकते हैं। सायु आ गई, ठीक है। तो रोज आ गई। मैं कौन गया फिर? मेरे मेन कैरेक्टर है। भाई कैरेक्टर भी पहचान में ये रह गए। Come on, let's go. There's a fortune to be made. और भी कोई रह गए क्या इसमें से? सॉरी, मेरे को अभी तक नहीं मिली। मेरे को दे दिया, काम ही नहीं है। थोड़ा यार हो गया मेरा, इतना टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा फिर। चलो चलो गाइस, मिलते हैं कल। आज बहुत लेट हो गया वैसे भी मेरे को। मॉर्निंग गुरु यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ऐड। अभी चलते हैं, लेट हो गया बहुत।
I'll do it tomorrow. मिलते हैं कल। ओके, कल इवनिंग से करूंगा मैं सीधा वैलोरेंट को छोड़ के इवनिंग से सीधा 7:30 बजे से सीधा जेनशिन। तो गाइस बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। यू गाइस आर रियली ओपी भाई। सपोर्ट ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, अपनी फैमिली भी बढ़ेगी, मजा भी आएगा। ओके, स्टोरी में मजा आ रहा है अभी धीरे धीरे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो यार, और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को तो कर दो। सब्सक्राइब भी वन के तो करना ही है भाई, किसी एंड के एंड तक 1 के करना है। मिलते हैं कल इसी के साथ। टाटा बाय बाय, आदियोस, वी विल मीट यू टुमारो। चल जा, बाय बाय।